Dear students, today we are going to study History chapter, The Rise of Nationalism in Europe. This chapter deals with many issues of nationalism. We will take up every issue one by one. Let's discuss the first important issue, that is nationalism. The question arises in our mind, what is the meaning of term nationalism? So the answer is, the term nationalism means feeling of oneness among citizens of a particular nation. This idea also denotes a sense of common identity and a sense of belongingness to a particular area where the people of that country are living. It also denotes a sense of attachment to a particular culture, language, cuisine, customs, folklore. It means नेशनलिज्म एक भावना है जो किसी देश में किसी एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी कॉमन हिस्ट्री, उनकी लैंग्वेज, उनके खान पान, उनकी वेशभूषा, उनके गीतों के द्वारा उन्हें बांध कर रखती है और उनमें एकता की भावना होती है। ये भावना सिर्फ लोगों में ही नहीं, उनके शासकों में भी होती है। इसी भावना को this concept was visualized for the first time by a French artist named Frederick Serreux in 1848. He visualized that the people of different countries are coming in groups and one can distinct them through their national flag and costumes. This was his utopian vision. According to Frederick Serreux, the people of the world are grouped as distinct nation, यानी भिन्न भिन्न देशों के रूप में हैं और उनको हम तभी पहचान सकते हैं जब उनकी कॉस्ट्यूम एक जैसी हो और इसके साथ साथ उनका फ्लैग उनकी पहचान बता दो। जैसा कि आप इस पिक्चर में ये इस पेंटिंग को फ्रेडरिक सैर्यू ने बनाया था, ये उनकी पहचान है देश के लोगों की। Now we will take up the next issue, that is nation state. Now the question arises, what is the meaning of the term nation state? So the children, the nation state means a nation where the majority of its citizens and its ruler, they come together and they develop a sense of common identity and they share common history, language, culture, and as well as costumes, folklores. Now, the third major issue जो आपके क्लास के लिए 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपना सारा फोकस इस तरफ लीजिएगा। द इशू इज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ये सबसे पहले किस देश में विकसित हुआ और कब हुआ? द आंसर इज दैट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन began in 1789 and with the convocation of a state general in May in France, and it paved the way for the modern nation state, and it was the instrument for the political transformation of Europe. I mean to say, the first notion of nationalism emerged in France in 1789 और फिर इसका प्रभाव रेस्ट ऑफ द यूरोप पर इसका प्रभाव या इम्पैक्ट पड़ा और उन्होंने अपने देश की एकता को फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू प्रोजेक्ट किया और ये है उनका नेशनल फ्लैग, दैट इज ट्राइकलर फ्लैग। Now we will take up the next major issue. What are the ideas of nationalism after French Revolution in France, which symbolizes unity of France? So we will take up the symbols of unity, the ideas of unity in France after French Revolution in 17
1789। क्लियर है बच्चों? 1789 के बाद फ्रांस की एकता को प्रदर्शित करने वाले क्या क्या चिन्ह थे, क्या सिंबल्स थे? अगेन पुट योर अटेंशन, पूरा फोकस रखिएगा। ये सिंबल्स आपको धीरे धीरे आपके जहन में, आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। द फर्स्ट सिंबल ऑफ यूनिटी वाज नेशनल असेंबली। द ruling power or the sovereignty was transferred from monarchical to the body of a French citizen, which was named as National Assembly. आपको याद होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है थर्ड स्टेट ने अपनी एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया थ्रू द कन्वोकेशन, यानी अपने सभा के द्वारा, और उसका नाम रखा गया जनरल असेंबली। लेकिन इस असेंबली को पुनः नया नाम दिया गया नेशनल असेंबली, और सभी नागरिक जो थे वो वहां पर क्या कहलाने लगे? ला सिटीजन्स, एंड इट emphasized the notion of a unity and united community enjoying equal rights under a constitution. This constitution was prepared by National Assembly, and France was considered as fatherland, and this was known as La Patrie. What were other symbols? The other symbols were the, which I have earlier told you, that the State General, they elected a body of assembly, and it was renamed as National Assembly. It was known as General Assembly, जिसे थर्ड स्टेट ने बनाया था। Then अपनी यूनिटी को प्रोजेक्ट करने के लिए फ्रेंच पीपल ने एक फ्लैग को चुना, और वो क्या था? उनका ट्राई कलर फ्लैग था। और अपनी यूनिटी को प्रोजेक्ट करने के लिए उन्होंने नेशनल लैंग्वेज चूज की, और वो नेशनल लैंग्वेज थी फ्रेंच लैंग्वेज। देन नेशनल एंथम वाज आल्सो कंपोज्ड, oath was taken in the name of nation state. Many hymns were composed in the name of martyrs, जिन्होंने संघर्ष के दौरान अपनी प्राणों की आहुति दी थी। तो उन मार्टियर्स के लिए भी हाइम्स अथवा गीत लिखे गए। देन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए नेशनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड, and a uniform system of weights and measures was adopted. So these 9 points are very important for the symbols of unity in France, and you have to keep it in your mind. अब now the question is कि जो ये नेशनलिज्म जो फ्रांस में 1789 में डेवलप हुआ थ्रू फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये धीरे धीरे फ्रांस से पूरे रेस्ट ऑफ द यूरोप में कैसे पहुंचा? सो द आंसर है द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड and much of Italy in 1790s and then rest of the Europe. यानी कि जो ये फ्रेंच आर्मीज थी, they were the harbingers of this feeling of nationalism to the rest of the Europe. अब आइए देखते हैं ये कौन है। This fellow is Napoleon Bonaparte. I'll inform you about Napoleon Bonaparte also. He was born on 15th August 1769. He graduated in 1785. He was very talented, and due to his popular military campaigns against Italy and Egypt, he was appointed as first consul of France in 1799. No sooner he took away the reins of France from 1799 to 1850, यानी कि फिर से उसने सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। फ्रांस फिर से एक मोनार्क के अंडर में आ गया। सोवेनिटी किसके पास ट्रांसफर हो गई? मोनार्क के पास। और ये मोनार्क कौन था? नेपोलियन। बट ही फॉलोड एवरीथिंग फॉर द फ्रेंच पीपल ऑन हिज मोटो। ध्यान दीजिएगा, उसने अपने लिए नहीं, फ्रेंच पीपल के लिए उसने लगातार काम किया। He introduced a civil code in 1804 and
also popularly known as Napoleon Code. He was a great leader. He gave French people the sense of national identity and pride. He centralized French rules through civil code. He swept away the old guild system and trade restrictions, and he became very popular. And he increased French army also. उसने कंपल्सरी कर दिया कि हर आदमी जो जो भी सिटीजन है नेपोलियन के रूल के अंदर वो फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करेगा, और धीरे धीरे उसने ड्रीम बना लिया कि पूरे यूरोप के ऊपर शासन करेगा. लेकिन इस ड्रीम के खिलाफ खुद दुश्मन भी आ गए, और वो चार उसके दुश्मन थे. There were four enemies, very powerful enemies in Europe, and they were Britain, Russia, Prussia, and Austria. They united together and they defeated Napoleon in the Battle of Waterloo in 1815. So, this was a very short information about Napoleon. मगर नेपोलियन का शासन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि उसने क्या इंट्रोड्यूस किया? Civil Code 1804. Again, this is one of the major issue for you all in class 10th, which you have to remember. So, Civil Code कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1804. किसने किया? नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया. And this code is also popularly known as Napoleonic Code. अब आइए हम देखते हैं इस कोड के अंतर्गत इसके अंदर क्या क्या चेंजेस फ्रांस में आए. One thing, he abolished all the privileges based on birth, that is based on clergies, nobility. इनको बहुत सारे विशेषाधिकार यानी privileges थे, उन सब को उसने समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, abolish कर दिया. As I have told you that his motto was everything for the French people. और ये सभी फ्रेंच पीपल के पास नेशनल आइडेंटिटी हो और प्राइड हो, इसीलिए उसने सारे प्रिविलेजेस अबॉलिश कर दिए. He established, and the second thing which he reformed, established equality before law. Third, he simplified administrative divisions within France. Next, he removed restrictions from guilds. Guild क्या होता है? ये ट्रेड यूनियंस होते हैं जिसमें ट्रेडर्स और मर्चेंट्स एक जगह से दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में जाकर ट्रेड करते थे. अब उनके पास जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उनको नेपोलियन ने रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से व्यापारिक गतिविधियां या इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज थी यूरोप में, स्पेशली इन फ्रांस, बहुत तेजी से डेवलप होने लगी. He also improved transportation and communication system in France. He abolished serfdom and he freed slaves or serfs. He also abolished feudal system. Next slide, I am going to revise what is serfdom, what was feudal system. Okay, so we are going to discuss the next issue, that is feudal system. Clear? आपने 9th में पढ़ा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस की सोसाइटी फ्यूडल सोसाइटी थी. फ्यूडल यानी सामंतवाद. सामंतवाद यानी कि सोसाइटी का क्लासिफिकेशन होता है, समाज का वर्गीकरण होता है. ये कई वर्गों और क्लासों में बटा हुआ होता है. टॉप पे तो रूलर होता है. देन सेकेंड जो क्लास है एक ही पिरामिड के तरीके से होता है. इसके पिरामिड के जो ऊपर जो माना जाता है वो है रूलर. रूलर जो है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है. एंड देन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स. फर्स्ट एस्टेट जिसमें कि क्लर्जीमैन आते थे, पादरी वर्ग आता था. सेकेंड एस्टेट जिसमें नोबिलिटी आती थी जिनके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस थे. थर्ड एस्टेट था जिसमें वर्किंग क्लास आते थे, ये मेजॉरिटी क्लास थी. इसमें पीजेंट्स आते थे और इसके साथ साथ वर्किंग पीपल जो कि प्रोडक्शन में काम करते थे, जैसे टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए या ट्रेडर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए. और इसके साथ साथ इसी एस्टेट में
पीजेंट्स के साथ साथ अनफ्री पीजेंट्स भी थे। अनफ्री पीजेंट्स को ही सर्फ कहा जाता था। तो सर्फ को भी क्या क्या नेपोलियन ने फ्री करा दिया। तो नेपोलियन तो बहुत पॉपुलर हो गया। नहीं, लेकिन नेपोलियनिक कोड के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। लेट अस सी व्हाट वर द ड्रॉबैक्स. He means Napoleon imposed lot of taxes on French people. So first drawback was there was increase in taxes on French people. Napoleon introduced censorship. कोई भी नेपोलियन के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकता था, लिख नहीं सकता था। प्रेस के ऊपर सेंसर लगा हुआ था। सेंसर मीन्स प्रतिबंध। Censorship was imposed during the reign of Napoleon. And he forced, I have already told you that जितने भी यंग जनरेशन थी, यंग मेन थे, उनको फोर्सफुली फ्रेंच आर्मी में रिक्रूट किया गया। जिन जिन एरिया को वो जीतता जाता था, उन सब एरियाज को, नॉट इन फ्रांस, इन अदर एरिया जैसे इटली हो गया, इजिप्ट हो गया, ब्रिटेन का भी काफी पार्ट था, उन सब को वो धीरे धीरे अपने अंदर कंट्रोल कर रहा था और कंट्रोल करके वहां के लोगों को उसमें शामिल करता था। किस में शामिल कर रहा था? आर्मी में शामिल कर रहा था। जिसकी वजह से उसके 4 पावरफुल एनिमीज डेवलप हो गए, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। क्लियर? अब हम यहाँ पे अपने फर्स्ट पार्ट को रिवाइज करेंगे कि हमने अब तक क्या क्या चीजें डिस्कस की। सबसे पहले हमने नेशनलिज्म का मीनिंग डिस्कस किया, एंड देन नेशनलिज्म को सबसे पहले विजुअलाइज किसने किया? फ्रेडरिक सैरियो ने किया 1848 में। देन वी डिस्कस्ड नोशन ऑफ नेशन स्टेट। और ये नोशन ऑफ नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म सबसे पहले हमें कहाँ दिखाई देता है? तो सबसे पहले हमें इसका प्रोजेक्शन या इमर्जेंस फ्रांस में दिखाई देता है थ्रू फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। देन वी डिस्कस द सिंबल्स ऑफ यूनिटी एंड इक्वालिटी इन फ्रांस, वो हमने डिस्कस की। देन वी डिस्कस्ड नेपोलियन, हिज राइज, हिज रोल, एंड as well as we discussed the civil code which was introduced by Napoleon in 1804. Then we discussed features of civil code and its impact, और उसकी वजह से उसके 4 दुश्मन हो गए, 4 एनिमीज हो गए जो एक साथ मिल गए और उन्होंने किसको हराया? अकेले नेपोलियन को। वो बेचारा अकेले पड़ गया और किस बैटल में हार गया? बैटल ऑफ वाटरलू में इन 1815। और यही जो 4 नेशंस थे, दे रोज अप, वो एक नया एक आइडिया लेकर आए, कंजर्वेटिज्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कंजर्वेटिज्म एंड उससे रिलेटेड अदर इश्यूज को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए, जो नोट्स आप बना चुके हैं और उनको फिर से आप पढ़िए, तब फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, बाय।